Good morning, friends. I'm Sarabjit Singh Puri from Fateh Rural Private Limited, Mumbai. Welcome to this session of BPM and automation. It seems to be a tough words for many people, including me. Many years ago, it was tough for me as well. I would like and welcome to Slide Alumni Association sessions of a series of lectures where we are trying to help you out or give information and knowledge sharing through this platform. Uh, I introduce you another facilitator, Mr. Sanjay Garg. He is a very big businessman and entrepreneur, very well known across his fields. Sanjay ji will introduce himself. Sanjay ji, please. Yeah, hi everyone. Myself Sanjay Garg. I'm a 1998 pass out from Mechanical GME division from Slide, and after that I did an MBA plus various other courses from the various universities and the colleges. After working for a few companies, then I started my own business in 2008 from solar power plants and the solar water heater systems. So I worked in that solar from 2008 till now. And 2017, I started my another venture in the range of waste management to a fuel oil. So that's our manufacturing plant based out of Uttarakhand, where we are generating a pure oil, just a one step lower than the diesel. Then it comes out to be in 2020, we again venture out for air to water generator, which is a patented technology and is funded by various international and the national capitalists. So we ourselves is again an investors in various companies also. Thank you. Welcome, Sanjay ji. Durgesh ji is saying good morning to all of you. And Thank you. I will introduce today's star, Mr. Vinay Mehta, who is very expert in all these things and BPM and automation and processes. It is going to be a tough one, guys, but he will try to make it simpler with the help of the stories and how we can achieve it. But it may be difficult, but it is possible with the help of geniuses like Mr. Vinay Mehta. Vinay ji, your introduction, and you can start also. If you want, I can present your screen also. First, Uh, you can introduce you. yes, thank you, sir. So glad to be here. I think this is a good series where we are actually sharing our experiences with the large audience who are into these subjects and into operations, all that. I'm Vinay Mehta. I'm GME 99 batch, 2002 passed out from Longwall. And since 2005, I am associated with Godrej. So I entered as a front sales executive and currently heading a function called Processes and Technology. So I'm a business process management specialist. I'm a digital enabler for Godrej Boys. I'm a DigiNext champion in Godrej Boys, which is a central body of Godrej Boys, and not only into the digital practices, but how to automate your manual processes and how your processes are interacting with each other. How can we leverage the technology to automate many of the processes and to increase your productivity, efficiencies, all that. So we'll talk on today's topic, all those things, all the nitty-gritties. Uh, Thanks. So, Sarabjit ji, I can go live. Okay. Just for who my screen is visible. Yes, it is. Okay. So as all know, so today's topic is your business process management and automation. That is the key to unlocking business. Only one request, Vinay ji. You please hide this. There is Oh, something coming on the yes, screen. yes, yes. Let me do it. Fine, sir. Yeah, thank you. Okay. Fine. So Yes. I proudly introduce myself as a business process management star championship winner. So I presented few automation and business process improvement case studies in BPM Asia 2018 championship, and
proudly say that I represented Godrej in that, and we were the winners in that conference. Uh, so BPM Asia is a forum where you can participate and present your case studies. And among Asian countries, people are coming and presenting their improvement case studies. So focus for today, we will understand what is a BPM, business process management, what is the BPM life cycle, what are the key elements of BPM, what are the benefits, and what are the automations available, and we'll talk on some case studies and success stories. Uh, I'm setting up a context. With there are many example where the best of the best people had the best of the best resources but failed uh, with some serious implications. So first story goes, if someone has already heard about this Winchester Mystery House, which is located in California. Okay, this is a large property. The owner of this property was a lady after the death of her husband. She was getting the earnings from their investment and resources approximately $1,000 a day. So they thought to create a house, which we now it is called as a Winchester Mystery House. So mystery, why it is called mystery? So they have spent a lot of money in the construction of this house. Till now, nobody has a clue that how many rooms are there in this house, and still counting, because when you are entering into room, you are just moving out of that uh, some door, and again you are entering into the same room. So how the architecture worked about on all those aspects was a great area of concern. So when we found what went wrong in that, okay, there was a no plan, there was no official blueprints of this place was drawn. Many of the architects, many of the contractors were there in the construction of this house, but nobody knew what to do exactly. So everybody did uh, on its own. So if you see an image on the right hand side, so there is a staircase going nowhere, and there's a handle which is appearing nowhere. So you have a windows, you can't see anywhere outside window because it's placed on a wall. And you see the balconies, because you can't enter the balcony because there is a wall behind the balcony, there is a no door. So that's why this house is called mystery house. The failure is there was no plan, there was a no official blueprint, there was no coordination between the architects, there was no coordination between the contractors working on the site. Again, coming to this next example, so the failed demo. uh, Elon Musk, everyone knows for his projects, for his excellence in artificial intelligence and many other aspects of industries and technology. So they introduced a cyber truck. They claim that this truck is the solid one, and nobody can even break the glass. So he went live on this demo, and this demo was conducted in the studio where it was streaming live. And when he actually hit the glass, and the glass broke, okay, and that was a very very embarrassing situation for Elon Musk himself. What to do, what not to do, he was not aware what happened actually. काफी टाइम इसको टेस्ट किया, ये टेस्ट करने के बाद भी ये ग्लास ब्रेक हुआ. Then they went on to the root cause, and what they found, the step was hit the window, and the step two was knock the door with sledgehammer, because this vehicle is very solid. So the process was first to hit the window, and the second to knock the door. And when Elon Musk went live, so what he did, he performed the step two first. He knocked the door with a sledgehammer. So what happened is, so the corner of glass already shattered with the impact of hammer. When he hit the glass with a steel ball, and the glass broke. So this is not about the product. The product was solid. The product
demonstration was planned. So every time the demonstration happened uh, in the practice sessions, so they were following the step one and step two, and while the live demo, they went totally reverse. So step two first, and it was a failed demo. Okay, so what is behind it? So this is something related to the process steps that we are going to follow, and this is all about the processes. matlab, how the people are adhering to those processes. It's all about those. So in a simple definition, so managing businesses through processes is a definition of business process management. So if I add some complexity to this definition, then the business process management is the employing of methods to discover, model, analyze, measure, improve, and optimize business strategies and processes. It's a very complex definition because each and every word in the definition has its own meaning. Okay, discover, model, analyze, measure, improve, optimize business strategy and processes. So we'll go deep into all those things when we are talking on business process management. Vinay ji, Gaurav Chitwal is saying, great to see Mr. Sanjay and Mr. Vinay on same platform. Thank you. Okay. So I'll talk about the business process management cycle first. So this cycle involves few of the elements: so design, modeling, execution, monitoring, and optimization. So how the business management, so business process management works. So first is your design. So how we are going to design our processes. So who will do what, at what stage, what activity will come. Okay. So process, who will be the process owner, what will be the process measurements. So this is the first step when we are going to design a process itself. How to do it, I'll come into some later slides. So what is a model? So during this step, so we create a visual representation of the process. So means create a flow chart. So how the activities are linked with each others. Okay, then we'll understand whether my process will deliver the results or it will not deliver the result. Okay, so we have many of the softwares which helps us to do this modeling and execution. So once the process is set, then we do the POC, that's proof of concept. In that, so we will flow that process within the limited group, and we take the feedback and refine the process before the final rollout. Monitoring. So during this phase, we actually monitor all the processes, whether this process is delivering the intended results, or if it is having any impact on efficiency, or if we are facing some bottlenecks. So this will come under monitoring. There is a Optimizing. suggestion. There is a suggestion from Durgesh. He says, "Sir, it would be better if you bilingual language so that we as a fresher can connect in a better way." Okay, fine. So Hindi I'll can be try to used. I'll try to do that, sir. Fine. So optimize is the final stage. So when we see that कि we have established process, हमारा process पूरा establish हो चुका है, अभी वो process के अंदर अभी भी कुछ और हो सकता है कि एक्टिविटी लेवल पे, फॉर एग्जांपल मेरी एक एक्टिविटी है, वो मैनुअल एक्टिविटी है, अगर मैं उस एक्टिविटी को ऑटोमेट करता हूँ, तो वो एक्टिविटी का टाइम कम हो जाएगा. तो दिस मीन्स दैट एक्टिविटी विल बी मोर प्रोडक्टिव, मोर एफिशिएंट. सो दिस इज द phase where we look into deep into the activities. Can we improve those steps, can we improve those activities? So this is a optimized stage. So this was a business process management cycle. Now coming to the benefits of business process management. So a lot of benefits are there. So if we follow business process management, then it will result in lower cost, reduced risk, product safety, improved predictability, superior quality, enhanced process consistency, greater brand protection, simplified operations. Lot of things are there, because when we are going to do something on the activity or something on the process itself,
So when we are talking about a process, what is a process? Why should I create a process? मेरे को करना क्यों है? मुझे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट चाहिए क्यों? सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि मैं अगर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ तो मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. Okay, and what are those benefits? So increased efficiency and cost. I just told that if we automate some activities within the process, it is going to result in the either in the efficiencies or in the cost saving. Many other things can happen. In the last part of this presentation, when I am going to talk on some automations, then we'll discuss this point of increased efficiency and cost savings, where we can see the how the automations are working in tandem with the processes. Vinay ji, I'll, I will like to add here. I would like to Sanjay. add here, as I'm also running a business from the last almost 20 plus years. I can see the point here of putting a BPM is that when we start putting BPM or processes, we start measuring actually. Before processes, before BPM, we are not measuring. हम लोग क्या है कि उसको मेजर नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती नहीं है, हम लोग उसको एनालाइज नहीं करते, हम उसको कंपेयर नहीं करते पिछले सालों के साथ, पिछले मंथ्स के साथ. तो ये सारी चीजें जब हम नहीं करते हैं तो हमारे सामने एनालिसिस नहीं आता. लेकिन जब बिल्कुल तक सही. हम बीपीएम नहीं डालते हैं तो तब तक क्या प्रॉब्लम होती है कि हम कंपेयर भी करते हैं कभी कभी, लेकिन हम लोगों का वो टाइम ही इतना ज्यादा लग जाता है कि हम उसका एक्चुअल बेनिफिट ले ही नहीं पाते. मतलब समटाइम्स भी अगर मान लीजिए ये ऑटोमेट नहीं है या हमारे पास ईआरपी सिस्टम नहीं रन कर रहा है या हमने प्रोसेस को ऑटोमेट नहीं किया हुआ है, तो हमारे पास डेटा आने में ही इतना टाइम लग जाता है कि हम उसको कब उसको एनालाइज करेंगे, कब उसको सामने किसी के रखेंगे, कब उसको मेजर करेंगे. तो ये सारी चीजें जो है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग इसमें काफी हाई लेवल पे रहती है. बिल्कुल सर. So, sir, you rightly touched the point of measurements. You rightly touched upon the points, the trend analysis, and you also touched upon the points कि I don't see कि मुझे करना क्या है. So when I don't compare the things, it will not lead me to something. Okay. राइट. So, sir, I'm glad that each and every point which you said with your experience is covered in the slides in some way. Okay. I'm ग्रेट. coming back to the processes, sir. So if anybody can tell me what is a process? Process होता क्या है? So screen is on, so you can type on the chat box what is a process for you. कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपके लिए प्रोसेस क्या है. So let me make this session a bit interactive because यस. I अगर want आपके you मन to में कोई understand प्रोसेस the है, concept. यस यस, आपके मन में कोई भी बात है, आप जरूरी नहीं कि एंटरप्रेन्योर ही हो, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप कहीं पर अपने इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट है, तो वहां पर भी बहुत सारे प्रोसेसेस की जरूरत है. तो वहां पर प्रोसेस है क्या, आपके मन में अगर कोई बात आती है तो आप बता सकते हैं. यस दुर्गेश जी. विनय जी, एक जस्ट मतलब कि एक क्वेश्चन है. दैट क्वेरी सेज, जो आपने एक साइकिल बताया है बिजनेस प्रोसेस का, Yes, sir. जिसमें मॉडलिंग, एग्जीक्यूशंस, प्रोसेसेस एंड ऑल दोस थिंग्स, you think that this is the only cycle for all the businesses, or it can be मतलब कि it can vary based on the business to business and So, sir, the cycle will remain the same. I'll tell you, within the cycle, the various activities may change depending upon the Mhm, business. So, it's a generic one. It's a generic cycle. It has to be there. Else, you cannot develop the business process management ka structure. Okay. I request you to just wait for a while. I'll come to those slides and you'll come एक to know और what I'm talking about. okay, विनय okay. जी, रुपेश सिंह ने लिखा है परफॉर्मिंग द टास्क वे आउट. Performance the task way out. Rupesh. Okay, thank you. So There's I'll one more. I'll give you one more point here. Dr. Sarita says process is the steps to complete any task from starting to end. very good. So starting to end. So this is a very important point in the process. So there is a start point, there is an end point, and there is a certain activities. Now, in my definition, so process is a list of activities to be performed in a sequence. Okay, to Yes. get the end results.
So this is very important. So activities must interact with each other to give the outcome. So I'm giving you a manual process. I don't know in these days how many of you go to banks to get the cash. I'm talking about visiting a bank branch and to get the cash. Okay. Uh, I have not visited, I think, more than 3 years, 4 years. I have not visited a bank branch to get the cash. I go to a ATM and get my cash. I think most of you do in the same way. Now the process is very much same. So it is the manual process says you go to the bank, you take out a slip there, you fill on the slip, you give it to the teller. Teller will give you the money. You sign the slip. You teller will go to teller. Teller will give you the money, and you count the money. You come back. So this is a normal manual process. Now what happened in the automation? So when the ATMs were introduced, the same process, manual process was automated. You have to go to bank, you have to go to ATM. You have to stand in the queue there, you have to stand in the queue here. Your paying slip has been replaced with debit cards, or your signs are replaced with your pins. Okay, and anywhere, anytime you go to the ATM, you need not to be time bound in a time bound manner. 5-3 बजे तक जाओगे बैंक में तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. So you can go at the night at 1 o'clock, 2 o'clock in the night. You can go to the ATM, you withdraw your money, you count and come back. So process remains same, but the elements in the process are changing, but the process is not changing. So this is a power of automation, and this is a power of reducing the load on the bank branches. Okay, many of the people are not going to the branches to withdraw the cash. So this is how the banks now increased efficiency and the cost saving both are getting by the branch. Branch need not to put more tellers in the branch Right. locations. So manpower is already reduced there with the introduction of simply ATM machines. Okay. So Now there is coming to the yeah. a few more definitions have come up. Vinayji, Jaskirat Puri says we imagine steps in a particular way and engage those to reach a particular end. Right. So And, and, and one I more think point I'll say. Okay, you want to carry on with the things. Okay. no, sir. So what I There did is a is for my there is a benefit, I put it on my mobile, so I'm okay. seeing the live questions. Okay, then another is process is set of sequences or steps to complete a task. Yes. So I spoke about the activities. I spoke about the sequence. I spoke about I think Ma'am Sarita told about end-to-end process right from the start to end. So this is something that is there. Okay. Now coming to the benefits again. So enhanced employee and customer experience, because there is a no. If I'm taking an example of bank only, so there is a no wait time there. So you need not to travel a lot. So this is a customer experience that you are getting from the banks. Even you go to the old branches of SBI and you will get a almost same experience now. So this is how the technology and the processes are helping to the organizations. And Another I would benefit. like to add here. I would like to add here. Mind it, this is not only a digital technology or only processes. The machine is basically mechanical, and it is working on electronics, and it is using computers and software programming. So, and it is also using sensors to count the notes. So, and to understand which notes are to know which are these notes. So to find out whether it is a 100 rupee note or a 500 rupee note or a 2 note. So in a way, complete engineering is being used in order to automate a simple ATM machine. So don't think it is only computers, only electronics, or only mechanical, or only instrumentation. It is almost everything, and we also need refrigeration inside inside an ATM machine because we need an AC. Then AC is again a complete industry in itself, and we also need a real estate because we need a space where everybody can visit easily. So it is a complete cycle of the things which is happening in a single ATM machine. So guys, don't think it is all computerization only. It is mechanical, it is instrumentation, it is electrical, it is refrigeration, and then it is process management. This is banking, almost everything. Okay. There's So one more question. Yeah, one more question. yes, sir. Bring a trader, businessman. How can I bring and use BPM and automation in my business?
He's RG and company from Mohali says they are basically into trading business. So how Uh, they can use it? सो सर मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है? ओके, सो ये अभी जरा आप पहुंचे नहीं है बैकग्राउंड। सो मैं आरजी आप एंड कंपनी आपके हम हर पहुंचे एक नहीं। हर एक क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास, ठीक है? मेरी स्लाइड्स में ही है, बिकॉज आई केप्ट दिस स्लाइड्स वेरी सिंपल कि कोई भी इफ somebody is into the business or if somebody is leading some positions, if somebody is into some activities, सबके लिए बेनिफिट है इसका, ओके? और कैसे करना है, आई एम कमिंग टू दैट ऑल्सो। ओके, मोर स्केलेबल प्रोसेस मींस कि अगर मैं एक छोटी सी जगह पे वो एक्टिविटी कर सकता हूँ, तो क्या मैं 10 जगह पे सेम एक्टिविटी कर सकता हूँ क्या? तो फॉर एग्जांपल आई गिव यू एग्जांपल ऑफ स्केलेबिलिटी। अगर मैं आप सब लोगों को सेम मटेरियल दूं चाय बनाने के लिए, सेम टी लीव्स, सेम शुगर ब्रांड, सेम मिल्क, इक्विपमेंट भी सेम, सेम गैस स्टोव, एवरीथिंग इज सेम, एंड आपको बोलूं कि मेरे लिए आप चाय बना के लाइए, विल द टेस्ट ऑफ टी बी सेम? क्या सभी का टेस्ट, जो भी आप चाय लेके आओगे, सबका टेस्ट सेम होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ओके, सो दिस इज, अगर मैं सब कुछ भी दूंगा तभी भी टेस्ट में वेरिएशंस होंगी, बिकॉज सर ह्यूमन तो ह्यूमन एलिमेंट है सर ह्यूमन उसके एलिमेंट है। अंदर दैट। इफ आई इग्नोर द ह्यूमन एलिमेंट, ओके, देयर विल बी डिविएशन इन द टेस्ट। व्हाई? बिकॉज हमने सिर्फ इक्विपमेंट और मटेरियल सेम रखा है, हमने चाय बनाने का प्रोसेस नहीं बताया आपको। अभी मैं आपको चाय बनाने का प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है? टेक 100 ml ऑफ वाटर इन अ पैन, बॉयल इट फॉर 1 minute, add 20 grams of sugar, add 30 grams of tea leaves, boil it for this much minutes, add 100 ml of milk, keep the flame on high mode, boil it for further 1 minute till it boils, uh, turn off the knob, take out the pan, and pour that tea into a cup using a filter. Okay. Now, if I circulate this document to all of you, will the taste be same? Yes, almost yes. Yes, almost same. almost Yeah, the taste will be same, because now the ingredients I have added, what are the ingredient in what quantity, and what are the timings that you need to take care while making a cup of tea. Fine. So this is the power of processes. So if I document all the processes, if I create a storyline on in the processes, and these processes will be scalable. So I don't care कि I'm having a tea in Chandigarh or I'm having a tea in Mumbai or I'm having a tea in Chennai, so I'll get the same taste of tea. And this was harped by vending machines. Okay, now the automated vending machines, you have a premixes, सबके पास अपने अपने premixes हैं। सो वो सिर्फ एक पैकेट आता है, मशीन में डालो, आपको अगर उसी मशीन का, उसी ब्रांड का अगर आप टी पाउडर लेते हो, तो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे चले जाओ, आपको सेम टेस्ट की टी मिलेगी। So this is the power of processes, and this is a power of automation. So processes, we have written down the process to make a tea, cup of tea, and the same thing is automated through vending machines. So this is a scalable process. मैं छोटी जगह से लेके बड़ी जगह पे, एक जगह से लेके 10 जगह पे सेम चीज रेप्लिकेट कर सकता हूँ। ओके, and ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। even you can control the things. Actually, it is not only replicating the things at a different place. You can measure it, you can control it, you can have a proper reviews from the place, you can have proper feedbacks from the place, and you can take action as per the things. ओके, नहीं बिल्कुल सही है सर। सो कंट्रोल इज वेरी वेरी essential for any activity. Okay, unless until those activities are controlled, you will not get the desired results. You touched upon very right point, sir. Okay, greater transparency. So when your processes are documented, you know who are the process owners, who you know whose responsibility is what. So this means your process is clear, transparent, anybody can see through it, okay, what is happening in a right way, what is not happening in a right way, is there any gap. So this is important part, when the people know what is happening, who's the owner, who's the responsible, and there is a large chance of good communication happening within the teams. Okay,
and a less dependency on the development teams. So BPM tools, there are certain tools which you can use. There are low code tools. You can frame out your own automations. I will touch upon in the later slides. So you know not to be spending money to hire a developer and do it for you. And this, if your processes are intact, so you can automate it yourself or with a little help. Okay, or you can engage with some consultants where the people can come to you and will tell you how to do it. Okay, once they train you, then your team or you can do it on your own. Okay, now this is a very good part, how to do it. So till the time we learned about the business process management cycle, we talked about what are the benefits of the business process management. Now करना क्या है, करना कैसे है, so this is an important aspect. So we'll touch upon the 7 enablers of business process management. So there is a process architecture, measurements, governance, change, mindset, capability, and support. We'll touch upon all these points in a sequence. Okay, just make you to understand what are there into these elements. So one of our friend, RG or RPG traders, so who have asked this question कि I'm a trader, मेरे मुझे कैसे benefit मिलेगा इसका. Okay, so answer is here in these slides, in these 7 elements. So आपको कैसे benefit मिलेगा? So when we are talking about the process architecture, so there should be a line of sight in the organization strategy. आपका vision क्या है? So vision क्या होता है कि मैंने थोड़े टाइम, so vision is a short term. So short term goals. Short term goals means आज मैं 10 करोड़ का मेरा बिजनेस है, 2025 तक मैं 15 करोड़ पे जाना चाह रहा हूँ. ओके, या मेरा आज मार्केट शेयर 3% है, ये 3% का मार्केट शेयर बढ़ा के मैं 5% पे जाना चाह रहा हूँ. व्हाट इज माय विजन? अगर मैं वो करना चाह रहा हूँ तो मुझे वो करने के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? ओके, अगर मेरी पास मेरी स्ट्रैटेजी है तो उस स्ट्रैटेजी को मैं अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में कैसे ट्रांसलेट करता हूँ. ओके, अगर वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में ट्रांसलेट हो गया तो मैं पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करूंगा वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, सो दैट मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो सेटिस्फाई हो और आई विल मूव टुवर्ड्स माय विजन. ठीक है, सो इट्स अ टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोसेस आर्किटेक्चर, बट द रिजल्ट्स यू आर गेटिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप. सो एवरी प्रोसेस मस्ट हैव अ लाइन ऑफ साइट टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी. मैं कोई भी प्रोसेस उठाऊं तो मुझे समझ में आना चाहिए कि मैं स्ट्रेटजी के कौन से एलिमेंट पे काम कर रहा हूँ. ओके, सो आई गिव यू सम एग्जांपल्स आल्सो. देयर आर शेयर्ड प्रोसेसेस. ओके, शेयर्ड प्रोसेसेस मींस जो आपके टॉप मैनेजमेंट प्रोसेसेस डिफाइन करती है. ओके, देयर आर कोर प्रोसेसेस जहां पे आप कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हो. फॉर एग्जांपल ऑन द स्क्रीन the core process is satisfaction of customers, so satisfy customer. Okay, so what you need to do for that, and something is required as a support to carry out this core process. Okay, so I will give you another example, but in this slide, so there are, it need to understand that there are common processes, there are support processes, and there are core processes. Okay, so these focus on value, so enhance communication and enable process performance management. So this is a very important slide to understand process architecture. Okay, so there are certain guiding processes. So for example, how we are planning our budgets, वो process को कुछ भी लेना देना नहीं है budget के साथ. Okay, maybe that some of the budget may be utilized in that process, but how that budget planning is happening, it's on the top. Okay, what is the contract process, what is the business rules, what are the policies of the businesses? So these are the guiding processes. Now coming to the core processes, so for example, the process name is customer acquisition. So what is happening in the customer acquisition? हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कस्टमर है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर एक सैंपल डेवलप करेंगे, फिर उसका अप्रूवल लेंगे, फिर साइन, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे. सो दिस इज माय कोर प्रोसेस. अभी इस प्रोसेस को करने के लिए मुझे लोग चाहिए.
सो मैन पावर चाहिए, तो इसके कुछ आईटी के सिस्टम चाहिए होंगे, मुझे बैठने की जगह चाहिए होगी, मुझे मेरा ऑफिस चाहिए होगा। सो दीज आर द एनेबलिंग प्रोसेसेस, जो मेरे सपोर्ट प्रोसेसेस। तो एचआर के कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ आईटी के प्रोसेसेस हैं, कुछ फैसिलिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। तो ये चीजें जब होंगी, ये तब मैं बोलूंगा कि मेरा प्रोसेस आर्किटेक्चर सेट है। नाउ द कोर प्रोसेसेस कैन बी एन नंबर्स। वो कोर प्रोसेस जो है वो 1 2 3 4 5 100 हो सकते हैं। गाइडिंग प्रोसेस पॉलिसीज सबके लिए सेम रहेंगी, अनेबलिंग प्रोसेस भी सबके लिए सेम रहेंगे। रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है सब चीज़ों में। मुझे किसी काम करने के लिए 4 बंदे चाहिए, किसी काम के लिए 10 बंदे चाहिए, मुझे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बंदे चाहिए। सो दैट एलिमेंट विल ऑल्सो ऑलवेज रिमेन डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स। ओके, तो ये प्रोसेसेस जो हैं वो डिफाइन कैसे होते हैं? सो प्रोसेस का एक पर्पस होता है, फाइन। प्रोसेस का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी। मेरा पर्पस क्या है? चाय बनाना। मेरा गोल क्या है? 3 मिनट के अंदर चाय बनाना, 2 मिनट के अंदर चाय बनाना। या मेरा गोल है कि मुझे चाय का टेस्ट का लेवल, इफ आई कैन डिफाइन, कि उस लेवल का टेस्ट चाहिए। ओके, स्कोप क्या है? स्कोप मीन्स कि मुझे ये होम के लिए प्रोसेस है, या इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, या फिर मेरी 4 ब्रांचेस के लिए प्रोसेस है, या मेरी 10 लोकेशंस के लिए प्रोसेस है, या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए प्रोसेस है। तो वो स्कोप। स्टेक होल्डर्स, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। स्टेक होल्डर का डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल करके मैं बताता हूँ। स्टेक होल्डर्स नॉर्मली हम इंटरेस्टेड पार्टीज भी बोलते हैं इनको। स्टेक होल्डर का मतलब ये है कि अगर मेरे काम से किसी को इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और किसी के काम से मुझे इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, सो दोज पीपल आर माई स्टेक होल्डर्स। ओके, मेरे स्टेक होल्डर्स मेरे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, मेरे स्टेक होल्डर्स मेरी टॉप मैनेजमेंट हो सकती है, मेरे स्टेक होल्डर्स मेरी कंपनी के अंदर के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, और कंपनी के बाहर जाऊं तो मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स, मेरे सप्लायर्स, मेरे कस्टमर्स, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, लॉयर्स, बहुत सारे और लोग हैं, सर्टिफिकेशंस बॉडीज, बहुत सारे और लोग हैं जो मेरे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। तो वो प्रोसेस के लिए कौन से स्टेक होल्डर्स हैं? वो प्रोसेस की कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट है क्या? ओके, वो प्रोसेस के अंदर कुछ कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट है क्या? ठीक है, कुछ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं क्या, कुछ एक्सेप्शंस हैं क्या? सो दीज आर 9 गाइडिंग पॉइंट्स। तो यू कैन मेक अ टेम्पलेट आउट ऑफ दीज 9 पॉइंट्स, कि आप अगर कोई प्रोसेस लिख रहे हो तो ये सारे के सारे 9 एलिमेंट्स आ जाने चाहिए उसके अंदर, सो दैट अगर वो पेपर किसी को भी आप दे दो तो ही कैन फॉलो द प्रोसेस और ही कैन लर्न द प्रोसेस। अभी फॉर एग्जांपल हमने वो ट्रेडिंग की बात की, तो उनके बिजनेस में हैव यू डिफाइंड ऑल द प्रोसेस? हैव यू डिफाइंड योर कैश कलेक्शन प्रोसेस? हैव यू डिफाइंड कि कैश कलेक्ट करने के बाद वो आप कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में जाएगा? अभी क्या हो रहा है कि जो छोटे बिजनेसेस हैं या छोटे ट्रेडर्स हैं, छोटे ट्रेडर्स मींस जिनका स्केल लार्ज नहीं है। सो छोटा डजंट मींस मनी, तो छोटा मींस कि स्केल लार्ज नहीं है, वो छोटे स्केल पे काम हो रहा है। तो वहां पे बहुत सारे जो प्रोसेसेस है ना वो मैनुअल हैं, या फिर वो बाय प्रैक्टिस चलते हैं। नहीं विनय जी, यहाँ मैं एक बात बोलूंगा आपको। हाँ जी, मैनुअल होना इज नॉट अ बिग डील। प्रॉब्लम इज देयर इज प्रोसेस हो रहा है लेकिन हमने उसको सेट नहीं किया है। सेट नहीं किया। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों में yes. फर्क है। मैनुअल या टेक्नोलॉजी अलग अलग चीज होगी, लेकिन प्रोसेस ही नहीं है। हाँ, प्रोसेस अभी हो रहा क्या है। है? हाँ सर, आपने वो राइट पॉइंट टच किया। आई एम एलेबोरेटिंग दिस पॉइंट ओनली, कि जहाँ पे आई एम सेइंग देयर आर प्रैक्टिसेस। ओके, प्रोसेस practice। नहीं है, बट वो प्रैक्टिस है, शुरू से वैसे ही चलता आ रहा है। ओके, वो कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए उसके ऊपर अभी ध्यान नहीं दिया। ओके, सो विल कम टू दैट पॉइंट आल्सो। सो देयर आर वेरियस मैकेनिज्म्स, यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल है, बट देयर आर मैकेनिज्म टू डिफाइन द प्रोसेसेस। विनय विनय साहब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपका ये केमिस्ट होते हैं, आप एक मेडिसिन मांगते हैं। हाँ जी, सो इतने बड़े लॉट में से, इतने बड़ी अपनी शॉप में से अगर वो एक एक मेडिसिन को विद इन सेकेंड्स या विद इन अ मिनट ये निकाल के ले आते हैं, बिकॉज उन्होंने हर एक कंपार्टमेंट या डब्बे के अंदर अपना अल्फाबेटिकल लिखा हुआ होता है कि दिस इज द मेडिसिन, और फिर Yes. वहां से उसको निकाल के लेके आना एंड देन विल गिव इट टू यू। दैट इज द वन प्रोसेस जो वो
बड़ा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली विद इन द टाइम फ्रेम वो करके देते हैं। एग्जैक्टली सर, मैं ये आपके एग्जांपल को थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ। सो उनका जो रिट्रीवल का प्रोसेस है, ओके, स्टोरेज एंड रिट्रीवल का जो प्रोसेस है वो बहुत सॉलिड है। तो Yes. उन्होंने वहां पे वो डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखा है। अगर मेरे पास मेडिसिन का स्टॉक आया तो मैं उसके ऊपर पहले अपना बारकोड लगाऊंगा और उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे रखूंगा। बिल्कुल। ओके, सो दिस इज समथिंग, मैं थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में, बिकॉज इट्स अ बीपीएम, तो बिजनेस प्रोसेस की लैंग्वेज में मैंने बात किया वो, बट दिस इज समथिंग दैट पीपल अडहेयर टू दैट। Okay, discipline is very important. But In the here I will add one thing, Sanjay. You are right कि they are following the process in only doing this part, but they are not following the processes in other parts, because that is the most critical part. So they are just they have developed that particular part, but बाकी चीजों में वो develop नहीं करते। तो वो होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई नया बंदा ज्वाइन किया आज, उसको वो प्रोसेस सिखाया नहीं जाता, वो टाइम के साथ धक्के खा के गालियां गुलियां खा के सीख जाता है। और हो सकता है वो 100% सीखा भी ना हो, बीच में कोई ना कोई चीज, कोई एक्सेप्शन है, वो तभी सीखेगा जब वो एक्सेप्शन आएगी। तो ये जो प्रोसेस सेट करने के बाद उसको जो ट्रेनिंग पार्ट है वो होता ही नहीं है। मैं यार बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है, मैंने ये सब ऐसे ही किया है इतने सालों में, और धीरे धीरे जाके हम प्रोसेस पे आए हैं। It has taken time for us to actually reach that place, and everybody takes time. It's not about us only. But I training believe this is the first thing. But training to sir is always the must that we for anything that we, either it's a process or anything. दो चीजें हैं संजय जी, एक तो ट्रेनिंग है कि बंदे को डाल दिया और धीरे धीरे वो अपने आप सीख गया मत्था मुत्था मार के, ये भी ट्रेनिंग है। दूसरा ये है कि हमने उसको 2 दिन उसको शांति से बिठाया, उसको समझाया कि भी ऐसे 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 करके 15 दिन फिर से ट्रेनिंग दी, 15 दिन फिर से ट्रेनिंग दी, 15 दिन बाद, ताकि वो ट्रैक पे आ जाए। ये एक दूसरा तरीका है। लेकिन होता क्या है कि ये चीजें नॉर्मली कंपनीज में या छोटे बिजनेसेस में फॉलो नहीं होती। लेकिन मुझे अब लगता है कि कोई भी बिजनेस कभी भी स्टार्ट करे, सबसे पहले अपने प्रोसेस सेट करे और ट्रेनिंग का मॉड्यूल सेट करे और एचआर पॉलिसी सेट करे। जरूरी नहीं एचआर मैनेजर लगाना है, आप खुद भी कर सकते हो। बिल्कुल सही है सर। सर एक चीज और है सर, आपका मॉनिटरिंग पार्ट जो है ना, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपने ट्रेनिंग किया, आपने उसको कैसे मॉनिटर कर रहे हो और आपका उसका क्या प्रोसेस है, वेदर somebody is वो भी एक प्रोसेस है। दैट्स राइट। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं मालिक हूँ तो मेरा काम, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ही मॉनिटर करना चाहिए, कोई और मॉनिटर नहीं करेगा। तो ये प्रोसेस सेट करना जरूरी है, कौन से प्रोसेस को कौन मॉनिटर करेगा और उसकी रिपोर्टिंग मेरे तक कैसे पहुंचेगी। That is the point. I think, yeah. Viney ji, please. So great. I think this is a very fruitful discussion which happened. I am on my screen. I have given something जो आप लोगों ने बोला वो different process में है. So for example, so मेरा पास process architecture है, कुछ activities हैं, सब processes हैं. So उसका example है. So मेरा main process क्या है? Recruitment का process है. Okay. रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट का प्रोसेस है, उसके अंदर छोटा प्रोसेस है वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट के अंदर मेरा इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करनी है, या फिर कैंडिडेट की उसके बाद रेटिंग कैसे लेनी है, और कैंडिडेट का जो रेटिंग का गाइडलाइन क्या है, ओके, उसको कैसे रेट करना है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट प्रोसेस। और उसको मेजर कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे हर एक टाइम पे मेरी जो लोग हैं वो 98% से ऊपर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जो भी अगर मैंने कोई सिलेक्शन किया तो विद इन 30 डेज के अंदर वो सिलेक्शन हो जानी चाहिए, और जितनी भी शॉर्ट लिस्टिंग करते हूँ उसमें से लेस देन 1% रिजेक्ट होने चाहिए। कंप्लीट इंटरव्यू विद इन द टाइम फ्रेम, 95% इंटरव्यूज मस्ट बी कंडक्टेड ऑन टाइम। सो दीज आर द मेजरमेंट्स जो सरबजीत जी बात कर रहे थे मेजरमेंट्स की। सर जो आप सब प्रोसेसेस की बात कर रहे थे कि प्रोसेस के अंदर भी एक प्रोसेस है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन प्रोसेस, सब प्रोसेस के अंदर एक्टिविटी के अंदर उसकी गाइडलाइंस कि वो इतने लेवल तक हम वो अपने प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं। Yes, okay. There is one more question from Jignesh. Just hold on. Yes, what do we say to our competitors in related to my business? नहीं समझ आया सर, दोबारा बोलिए प्लीज। वो What do we say to the competitors in related to my business? मतलब शायद वो ठीक से लिख नहीं पाए, हिंदी में लिख दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो शायद वो कह रहे हैं कि competitors के साथ हम किस तरीके से बेटर हो सकते हैं BPM यूज करके। हाँ, BPM, हाँ। सो सर कंपटीटर के, बिकॉज व्हेन योर प्रोसेसेस आर सेट, यू नो योर लीवर्स कि मुझे कहाँ पे ट्वीक करना है, कहाँ पे खेलना है,
कंपटीशन के पॉइंट ऑफ, अगर आपका प्रोसेस एक्टिविटी सेट नहीं होंगी तो आपको आपका प्रोसेस बताएगा ही नहीं कि मुझे कहाँ खेलना है। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करिए, जब मैं डैशबोर्ड्स पे आऊंगा तो देन यू विल कम टू नो वेयर यू आर स्टैंडिंग। इसमें मैं आपको ऐड करके देता हूँ विनय जी, मेरा हाँ जी, पर्सनल एक्सपीरियंस काफी रहा है ऐसी चीजों में। हाँ अब जी, जैसे फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करते हो, और नॉर्मली बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी पे परसेंटेज पे बहुत बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि कितने प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज एवरी एवरी सेल पे कितना हो रहा है। होता क्या है, कभी कभी हम लोग कंपटीशन में आके रेट रूट कम करके हम ईगो में भी आ जाते हैं। कभी कभी हमें ऑर्डर लेना होता है तो ईगो में आके, कभी कभी जोश में आके, एनर्जी में आके हम ऑर्डर ले लेते हैं। लेकिन होता प्रॉब्लम ये है कि आ, आ, प्रॉफिट नहीं आता फिर। जो, हाँ मतलब जो हमने मेजरमेंट का एक बेसिस रखा है उसकी तरफ ध्यान देता नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस में है नहीं। तो बिल्कुल प्रोसेस में नॉर्मली क्या, टॉप लाइन रहती है, बॉटम लाइन नॉर्मली प्रोसेस दिमाग में होती नहीं है। लेकिन जब हम प्रोसेस सेट कर देते हैं, मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग ऐसे ही पहले करते थे कि भी कितना ऑर्डर आ गया, कितने ऑर्डर आ गए, कितने ऑर्डर आ गए, डन 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 हो गया। तो जी ये 20 लाख का ऑर्डर आ रहा है, कैसे करें? मैं यार कर, बंदे पीछे लग गए, ऑर्डर ले लिया। बाद में पता चला जी ऑलमोस्ट रेट टू रेट ही ले लिया, बेनिफिट ही कुछ नहीं हुआ, तो बस टॉप लाइन बनी है। लेकिन जब हमने प्रोसेस सेट किए, जब हमारे प्रोसेस कंसल्टेंट ने क्लियरली बोला कि भाई इतने टाइम से या इतने 1.3 1.2 1.5 उसके अलावा नहीं लेना है ऑर्डर, तो फिर वो मेजरमेंट चालू हुई, फिर वो नेगोशिएशन हमारे साथ चालू हुई मैनेजमेंट के साथ। सर ये 1.3 पे जा रहा है, ले ले क्या? मतलब कम से कम वी नो कि भाई का लेना है या नहीं लेना है एक अलग बात है, लेकिन व्हाट यू आर सेइंग इज राइट कि वी शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग कि वी शुड गो फॉर इट। दैट्स द पॉइंट। सो और आपने वी कैन यूज मेजरमेंट की दैट बात, मनी फॉर समथिंग एल्स। या सर मेजरमेंट की बात की, मेजरमेंट इज ऑन द स्क्रीन। सो हाउ द प्रोसेस शुड परफॉर्म, यस, उसको परफॉर्म करना कैसे चाहिए, हाउ इट इज परफॉर्मिंग इज अ मेजरमेंट। ओके, सो इस्टेब्लिश अप्रोप्रिएट मेजरमेंट एंड मैनेज दैट मेजरमेंट, कि क्या मेजर कैसे करना है, और वो मेजरमेंट को भी मैनेज करना पड़ेगा। ओके, राइट, तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस गोल्स, प्रोसेस केपीआईज, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेरे गोल्स क्या हैं, और मेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, मेरी मेजरमेंट क्या है। सो वो मेजरमेंट क्या हो सकती है, वो कॉस्ट हो सकती है, टाइम हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, प्रोडक्टिविटी हो सकता है, सेफ्टी हो सकती है, मोरल हो सकती है। सो दीज आर सर्टन इंडिकेटर्स कि जहाँ पे मैं मेजर कर सकता हूँ कि मेरी कॉस्ट इंप्रूव हो रही है, डिक्रीज हो रही है, टाइम इंप्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा, क्वालिटी रिजेक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई है। So this is something that I can keep on my measurements. Now coming to the governance wala part, so Sarabjit ji spoke on the controls. So how I am going to control? So process owners are accountable for the responding to the process performance or any discrepancies or any opportunities. तो आज की डेट में व्हाट इज हैपनिंग इज, इन विच डायरेक्शन जो मैनेजमेंट का फोकस कैसे होता है, मैनेजमेंट का फोकस क्या है, वो टॉप टू डाउन फोकस है। काम कैसे होता है, काम वो हॉरिजेंटली होता है, विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द फंक्शंस, लोग आपस में बात करके विद इन द फंक्शन एंड डिपार्टमेंट्स, तब वो काम होता है। फाइन, होना कैसे चाहिए, दैट इज अ प्रोसेस, कि आपका टॉप डाउन कहीं पे इंटरसेक्शन है, कौन सा प्रोसेस किस डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है। सो आपका जो गवर्नेंस मॉडल है, इट शुड इंडिकेट व्हाट आर द टच पॉइंट्स। ओके, सो इसके लिए व्हाट शुड वी डू इज, हु इज द ऑनर ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस का ऑनर कौन है, उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो इफ आई कैन इस्टेब्लिश अ काउंसिल वेयर द एक्सपर्ट्स आर देयर, एक्सपर्ट्स मींस आपके बिजनेस के आपके ही लोग जिनको एक्सपीरियंस हो गया, दे कैन एक्ट एज अ काउंसिल मेंबर, दे कैन एक्ट एज अ प्रोसेस एक्सपर्ट्स which can do, these can advise or they can check the process or they can say that okay अभी वो चेंज का जरूरत है प्रोसेस का, या अभी चेंज का जरूरत नहीं है प्रोसेस का। सो सारा गवर्नेंस जो है वो उन लोगों के पास रहे प्रोसेसेस का। सो दैट इज अ गवर्नेंस मॉडल। Now coming to the change, so this is a famous saying, it is not the strongest or the most intelligent who will survive, but those who can best manage the change. Okay, राइट, so when we are actually performing the processes, we will have an opportunity to improve those processes. So then we will come to the change management process, कि अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, या फिर मेरा कुछ अपॉर्चुनिटी है प्रोसेस इंप्रूव करने का, या कुछ गैप्स हैं गैप्स को फिल करने का, देन आई शुड चेंज द प्रोसेस। ओके, सबसे बड़ी चीज इज अ माइंडसेट इन द पीपल। मैं इतने टाइम से ऐसे ही काम कर रहा हूँ, अरे हमारी पुश्तें ऐसे काम कर रही हैं,
बहुत सालों से ऐसा ही काम होता है। ये सब चीजें जो है ना, ये नए लोगों को सुनने में बहुत ज्यादा मिलती। बट व्हाट इज इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट. सो इफ we can improve as much as my mindset allows me to do it. Okay. if for example एक छोटे से बच्चे की कहानी है. एक छोटे से बच्चा, 4-5 साल का बच्चा, वो कुएं में गिर गया. कोई 8-9 साल का बच्चे ने छलांग लगाया, उस वो बच्चे को, छोटे को बाहर निकाल के ले आया. एंड पूरा गांव वाज इमेज कि यार इतना छोटा बच्चा कुएं में कूद कैसे गया, और इतना छोटा बच्चा वो कुएं में से निकाल के कैसे ले आया वो छोटे बच्चे को. तो किसी ने उसको उनको समझाया कि अभी इस बच्चे को किसी ने ये नहीं बताया है, ये नहीं समझाया है कि बेटा ये तू नहीं कर सकता. तो उसको पता ही नहीं कि वो नहीं कर सकता, तो उसने कर दिया. So this is the how mindset work. When some constraints are there in my mind, I will not change. Okay, so this is very important aspect. So 90% is a mindset in the process. 10% the tools that we use. If I don't want, if I refuse to use the tool, it's my mindset. If I accept that tool, so it's again my mindset. Okay. And so creating an environment where the organization and its people and their teams allowed the conscious of the process in which they participate means कि उनको सब चीजें करने के लिए अलाउ करो, थोड़ा सा रूम दो, एम्पावरमेंट दो, सो दैट उनका माइंडसेट चेंज हो, उनको टूल्स दो. So this is something related to mindset, and this is very important for innovations. This is very important for change management. This is also important for your on growth. Okay. Change management is very important actually. Change management. How can we do it? Is we can have a regular meetings. We can have some information sharing. We have innovation jams. Innovation jams means if somebody giving a good idea, or if can we move on to that idea, can we support that idea, so we can document the success stories. So a lot of things, reward and recognitions for the teams. Lot of things we can do to actually gear up the mindset of the people with respect to the processes. Now coming to the process capabilities, so I think Sanjay ji touched upon the training part. So identify and conduct trainings and practice it. So train, practice. So learn, train, practice, improve. So this is a process that need to be followed for the capabilities. Okay. Now process support. So we have lot of things we have spoken about, but we still need support. So in support in the form of any assistance, any guidance, any information, any advice in any direction. Currently in the small businesses, there is a one business owner, सब चीजें उनके पास आती हैं. He is the only support mechanism. But if he can create some other people around him, or some small portals, or small something where the information is readily available. I'll touch upon this in detail in a while. So this is all about your 7 enablers. If these 7 enablers are missing, then what will happen? If architecture is not there, there is a disharmony. If measurement is not there, there is a guesswork. If governance is not there, there is a disorder. If change is not the change, process change is not there, there is a ineffectiveness. If the mindset is not there, then there will be more disagreements, more conflicts which is happening within the organizations. If capability is not there, then there is a frustration. And if support is not there, then people will not even perform. Now coming to the most interesting part of automation and a digital journey, how can you automate your processes? I'm giving you many examples right now, so you can opt for any of the automation which is required for your company, for your organization. Even we can support you after it. So you can contact with us, so we can actually advise you on that part. Okay, what you can do on this. Okay, so for example, for process automations, we have Excel So here, based. Vinay ji, I will stop you. Rupesh Singh says great session with both aspects, theoretical as well as collective experiences. Thank From you. Rupesh side, and Vinay ji, we have been in the session for the last 54.5 minutes. Please carry on. Any questions, guys? Please come up with questions, with your specific questions, with your specific asks. Please come up so that we can
actually use Mr. Vinay Mehta. Even you can connect him later on also. But if there are something, everybody will be able to get help out of that. Yes, sir. या सो अभी तक मेरा काफी सारा थ्योरेटिकल पार्ट था, वो थ्योरी था, ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर एस्टैब्लिश्ड अ प्रोसेस, एक बार प्रोसेस एस्टैब्लिश हो गया तो ऑटोमेट करना आसान होता है. अगर प्रोसेस ही नहीं है तो उसको हम ऑटोमेट क्या करेंगे? Okay, so I'm giving you now, this is a purely practical things which are in existence, which we are doing in Godrej and Boyace, and I helped many other organizations also to carry out these activities in an automated way. So we have Excel based macros, we are using Office 365 Microsoft platforms, we are using Power Apps, SharePoint of Microsoft, Power Automate. जिनको ये चीज़ें नहीं पता हैं उनको मैं बता दूं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो हम ऑटोमेट कर सकते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ. ओके, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सेल के मैक्रोज हैं, गूगल की शीट्स हैं. सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसिंग मैन पावर, रिड्यूसिंग मैन आवर्स. So for example, 3 hour works can be done in 1 minute, 10 minutes. So with the help of all these automation, we achieve a lot. So for example, we use share power automate is nothing but it's a flow, is a workflow which is happening. So अगर आपका कुछ अप्रूवल सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आपको आपके बॉस से बजट अप्रूव चाहिए, आज की डेट में आप एक पेपर पे जाते हो, पेपर मैनुअल प्रोसेसेस, पेपर पे प्रपोजल लिखो, बॉस के पास जाओ, बॉस ने अप्रूव किया, बॉस के पास जाओ, उसने अप्रूव किया, देन वो बजट लेके या फिर वो सैंक्शन पेपर लेके अकाउंट्स के पास जाओ, फाइनेंस के पास जाओ. So this is something a manual process. So everything can be automated, where you will be having a small form, you are filling that form automatically, an email is going to your boss is approving on email, then the email will go to the next step and final to the destination. So people are not moving, paper is not moving, only the information is moving. So this is how the efficiency is getting increased. So we have a Microsoft SharePoint integration. So SharePoint can interact with mobile apps, social feeds, communities, OneDrive, which is again storage space, Power Pivot, Power View, Power BI. So SharePoint is a very powerful tool where you can actually make it to any extent. So any extent, I'll talk on this part also. So again, Power Automate का example which I have just given, किसी ने रिक्वेस्ट किया, डिलीवरी मैनेजर के पास गई रिक्वेस्ट, उसने रिजेक्ट किया तो बाहर सिस्टम में लैंड हो गया, अगर उसने अप्रूव किया नेक्स्ट लेवल पे गया, अगर वो 24 घंटे तक अप्रूव नहीं हुआ तो उसके डायरेक्टर के पास एस्केलेशन हो गया. तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली इट रन्स इनटू द सिस्टम. अगर आपने एक बार प्रोसेस सेट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली चलेगा. Sir, there are 2 points here. Just a minute. One is RG and company from Wali says Mr. Sanjay it is for Mr. Sanjay. Sanjay ji is running 3 businesses. How is using BPM and automation tools in his business routine? Sanjay ji, you have to answer it. Gaurav ji, basically, yes, in our solar business, what we do is that once we get an order, so it all goes to our project team. So in the project team, they decide the timelines, and then they pass on that particular order to the design team, who does the all kind of designing activities in terms of the drawings part, in terms of the TDS, technical data sheet specifications and all those things approval. And then once all the things got approved, it goes for the procurement team. And then it looks after that which all are the makes which we need to be identified and need to procure, that what are the timelines to procurement and all those things. So from there itself, it comes out to be that when is the finance required for that particular project, and which is further being automated from our side, that it goes that the procurement will happen. Then the installation teams or the project execution teams will come into the picture, who start doing the execution part. And then there is a monitoring team in terms of our supervisors, as well as the safety teams is there, who does perform the safety activities, and all the safety documentation is there. So there is a long process and the activities, whereas Vinay ji is already been mentioning in their own slides. So yes, without any kind of a process or the planning, I think you can't run any of the business. Yeah.
One thing is that every company, either it's a trader or it's a company or any kind of a activity you are doing it, so there is a planning and there is a process is there. The only thing which matters is that an effective tool for your own business. Are you monitoring it properly? Are you giving a training to your guys to make it sure that the things should happen in place in a right time at a right place and with a full of effectiveness and optimization? So these are the things which need to be taken care, as Puri Saab said, and again in my case also, that well, I think that I hardly interact with the client once we get any kind of an order, and the execution part I don't know even, except that I only come to know that this kind of a finance is required. So there are lot many things, Gauravji, probably which we can discuss it at a later stage. I think this is Vinay's session, so let's understand and learn from him. Vinayji, there is one more invitation for you. Mr. Vikas Gupta, our batchmate, he is a very big businessman in tools industry. He is based at Ludhiana. So he says, if you find time to come down to Ludhiana, he want to discuss in detail for automation of the processes. So he Okay. is the one person who would like to have a guidance from your side. We So, will yes, sir. pass I'll on. be in touch with you, sir. There is one more thing come up from Mr. Durgesh Kumar, sir. As I am going to be a get this year, okay, get. I don't understand. I need some suggestions from your side, like how can I contribute more to the organization? It's a GET is a graduate engineer training, if I'm not wrong. Okay, So he is. Okay. So you can be in touch with me. So I'm happy to help you on that case. Okay. So coming to the automations again, so you can have a so we हमने बहुत सारा ट्रेनिंग का बात किया, बहुत सारे प्रोसेसेस का बात किया, वो सब चीज़ों को मैनेज कैसे करना है. So you can have a one knowledge management portal, very low cost. अगर आप कहीं बाहर से नॉलेज मैनेजमेंट पोर्टल बनवाते हैं तो वो 2 करोड़ से 5 करोड़ 10 करोड़ तक जाता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. छोटी ऑर्गेनाइजेशन need to shell out around 20-25 lakhs 50 lakhs rupees on the knowledge management portal. So if you know the SharePoint, you can create your own portal, or we can help you out to develop that knowledge management portal. So we have Power BI dashboard, email notifications, and daily business MIS. So this is a small email screenshot, which is nothing. It is automatically going from Excel to the business people that these are your business parameters and your performance. These are the automated mails which are going. As I said, so you can create your own knowledge portal or SharePoint intranet for your business, where the people can come and see what is there at one point solution. So I'm giving you a very small live demo. This is my knowledge management portal. I developed this portal for my organization. Okay, so it's running very fine, very successfully. So what are the contents? Just let me log into that. Okay, so for example, so we have all the processes here. So anybody can come and see what are the various functional processes. We have lot of dashboards. So anybody can come and see their own dashboards onto this profile. This is all authenticated, well controlled systems which are established. And coming to other dashboards, operational dashboards, those dashboards are also there. We have wall of fame for employees, whosoever is doing the good job. We are placing all their achievements on this portal. And not only this, so this is a one-stop solution for each and every activity which is happening within the organization. So whether it's a dashboard, lot of dashboards, okay, a lot of applications which are developed on Power Automate. So you can go and you can see each and every application. So this is a one. So knowledge portal is nothing but it's a one-stop solution for each and every type of information that you need to give, or it's also a platform where the people can also contribute to the knowledge or information. Okay. Wonderful, Vinayji. Wonderful. I think everybody needs it. Every businessman should implement it, and you will be in a quite busy man now.
Everybody will be calling you. So a lot of First of all, dashboard. I will call you to build this up for my company as well, because we are using ERP and all that, but still this seems to be much active and visible, and it is online, so it is easily accessible to everybody. Yes. Yeah, So yeah, definitely, sir. This is really an enlightening session for all of us. Enlightening and And eye-opener. And I yeah, yeah, congratulate yes, Vinay. definitely. I thank you, congratulate sir. Vinay for engaging people for this long. It is more than 1 hour, and still there are 20-25 people still watching you. It means you have got that power. So, so let me, so I'll not take more than 10 minutes. So we have a lot of live dashboards where the people are seeing the online data which is coming directly from the servers. So you can also establish some dashboard using Power BI. If you cannot use Power BI, we have alternate solutions as well. This is a Power BI ka, it's a very powerful tool, can integrate it with any dashboards, any data sets in any form. So this is a very powerful tool for the dashboarding. Coming to Excel automations, so you have so many type of automation can happen on for businesses and marketing. So coloring the territory maps, bill verification modules, Superb. any excellence software, which is reporting software, e-commerce tracking reporting. Lot many automations are available, and annual business plans, your Excel to PowerPoint, your email to every customer, automated email for outstanding follow-ups, order booking form Fantastic. completer. So many project budget reviews, consolidation, combining many files into one. Okay. Automated dashboard, Excel dashboard, search engines, date corrections, meeting room bookings, student report card generator. Many of the automations are available in Excel. Using the macros, we can do many of the things which within the Excel itself. Okay, and this is the last slide. Okay, remember our objective, what is our strategy, what is our promise to our stakeholders, and how I am actually establishing my process architecture. So this is a topmost thing that we need to start with. Now, after doing that, what is the each process should have? Each process should have its objective, its measurements, okay, and it's the process ka KPI itself. Okay, this measure what would track the objectives, objectives को कैसे track करना है और processes को कैसे track करना है, उसका process का performance कैसे देखना है, and अगर ये सब कुछ हो गया तो how I am managing my performance. So what are my performance gaps? This will be on your dashboards. This will be on your intranet. It should be on your knowledge portal where anybody can see his performance. What is the impact of that gap and how I am going to change it? Okay. So this is what the BPM and automation is all about. So So there are a lot of people saying, RG and company says I may need your service. Sorry. And Rupesh Singh says I am owning Tecker Engineering Private Limited. He also want to interact with you. Ankita Sharma says great session. Thanks for supporting and guiding us. So a lot of people are getting inspired from you, Mr. Vinay, including us. okay, sir. So we are waiting for your Delhi visit. Definitely, Vinit. So I'm based out of Delhi, so looking forward to meet you. I'm coming Yeah. to Delhi, but I don't know. But it's on my personal commitments. I'm landing in Delhi on first. So from Oh first to wow, fourth that's in good. Delhi. So So let's see that if you have some time, then definitely would love to meet you. I'll be in Noida only. Great, Oh wow, Vinayji. that's I great. think we are still live. Yes, sir. Uh, uh, so I have rectified. Gupta ji rectified. He said, "I will not. I will say not may, but I will need your services." First he wrote, "I may need your services." Now he says, "I need your services." Harpreet Singh is again saying, "Mr. Vinay, myself, Harpreet Singh, our company provides robotic and welding automation." He is even our senior. Harpreet ji, Sat Sri Akal. And automation turnkey solutions for manufacturing industries. We would like to associate.
So all these entrepreneurs I have told you, Vinay, what you have shown us is something very different So, and something very fantastic, very fascinating. I know it needs a lot of hard work also in order to implement it. Even our hard work is required, our mindset change is required, our company's team's mindset change is required. But still, it is something eye-opening, and it can actually change the efficiency and improvement in our processes as well as our company's strength. so actually, sir, it was challenge for me to squeeze this program in 1 hour, because we normally take this program for 2 days. So this Nay, is I a understand, another, Vinay ji. I understand. We have it's a not another started intense that program. yet. Yeah. We will start that kind of programs like a series of the things. We will start with that also as an alumni association. But still, now we are at we have just started in just 1 month's time. I think it is enough. But we have at least been able to start a lecture series. Thank you, Vinay ji, and thank you, Sanjay Garg ji. It has been great to Thank be you. connecting with you. You please Thank you. stay there. I am ending the broadcast.